Welcome to Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable MLA Bichuri, Dr. Chandrakant Shetty, Honorable MLA Maye, Shri Deendayal Shet, Dr. Mukesh Rajan Das, ED HR IOCL, Shri Soumitra Srivastava, ED State Head IOCL NSO. We also have with us Dr. Sridhar Thakur, Vaidya Soine Damle, Dr. Kole, Dr. Khabikar, Dr. Shekhar Sarkar, Chairman Shri Vallabh Sarkar, Vice Chairman Shri Shripad Patnekar, Secretary Shri Arun Naik, CEO Shri Madhukar Patnekar, all the directors of the Deendayal Trust, a very warm welcome. I must also mention AG Shri Devidas Pangam, who had come here but left due to some urgency of work. As we all know, in the year 1996, some like-minded people came together who were socially oriented, wanted to do something for society. Initially started a credit society and later widened their area of work, entered into primary education, healthcare, and today they have something very noble, very essential to be given to society. We shall hear about it in detail, but let's now welcome our distinguished guest with flowers before we move ahead. May I request Vice Chairman Shri Shripad Patnekar to welcome Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji. I request Secretary Shri Arun Naik to present a bouquet to Dr. M.R. Das, ED HR IOCL. Requesting Shri Subhash Patnekar, CEO Deendayal, to welcome Shri Soumitra Srivastava, ED IOCL. Kind request to Shri Pradeep Senekar, Director Deendayal, to welcome Shri Vallabh Sarkar, Chairman. Requesting Shri Shyam Matunkar to welcome Honorable MLA Shri Chandrakant Shetty. I request Shri Vittal Vaidnikar to welcome Honorable MLA Shri Premendra Shet. Thank you. I would now like to call such a person who was there since 1996, when the seed of Credit Society was sown, Vice Chairman Deendayal Trust, Shri Shripad Patnekar, to welcome this august gathering and also to give some background of this project. Shri Patnekar. Respected dignitaries on the dais, Honorable Chief Minister Dr. Pramod ji, Executive Director IOCL Dr. M.R. Das, Executive Director Sri Soumitra ji, Chairman Deendayal Vallabh Sarkar, MLA Premendra Shet, my constituency, Dr. Chandrakant Shetty, MLA Bichuri constituency, all dignitaries, press, and dear friends. On behalf of Deendayal, I welcome you all for this function of handing over hospital premises to our trust, Deendayal Janaseva Pratisthan, by Indian Oil Company. Indian Oil Company has sponsored the entire construction cost of 10.36 crores through their CSR initiative. We express our deepest gratitude for this generous donation. It will be state-of-the-art 50-bedded integrated hospital with both Ayurvedic and allopathic facilities. You may be aware that first we started Credit Society in 1996. At a time when the credibility of cooperative institutions, particularly cooperative society, was lost due to corruption and other factors. It was a challenging time for us to regain the faith and trust among the people on cooperative credit society. We named our credit society after Deendayal Upadhyay, a legend. He was basically RSS Pracharak and then became the president of BJP. He sacrificed his life for the cause of common man. He advised the workers working in the cooperative field that they should behave as trustees and utilize the fund meticulously. Hence, we, the director, decided to work selflessly without seeking any personal monetary benefit. And I am very proud to say that so far, for last 27 years, we don't claim any TAD, neither we take any sitting fees.
voluntary we are working for the cause of the society, and we are adhering to the norms till now. Credit society is making handsome profit. These profits are utilized by us for the benefit of needy person of the society. We started this trust to undertake social activities, and we first started pre-primary schools and primary school up to 4th standard. Our Honorable Chief Minister in one of the meeting suggested that we should start Ayurvedic hospital. Accordingly, we started Ayurvedic clinic in 2016. We took full-time Ayurvedic doctors and subsequently renowned Ayurvedic doctors like Dr. Damle Nilesh Kode is present here, Dr. Sriram Kadilkar, visiting our clinic periodically, and more than 600 patients visit our clinic every month. Encouraged by such good response, we decided to start this 50-bedded hospital, and we purchased a land of 4,000 square meters. For this purpose, we paid 2.5 crores to purchase the land measuring 4,000 square meters, and we have prepared the detailed project report. The total estimated cost was rupees 18 crores initially, and DPR was submitted to IOCL. Raising this fund was a challenge. Incidentally, we contacted Rajan Arlekar, present Governor of Bihar. He was the chairman of CSR committee of your company. We discussed this project. We and our chairman visited his house at Vasco, and we discussed the detailed project with him. He was convinced about this project. He is our founder member and our committed cause to the social justice. So he ensured to look into the matter, and your company IOCL was kind enough to sanction 10.36 crores towards the entire cost of the construction of the hospital building, and now the building is ready. We all trustees express our deepest gratitude and thank the chairman, executive director, directors and all other dignitaries gathered here from IOCL for your generous donation for our hospital project. We are also grateful to our Honorable CM, Dr. Pramodji Sawant. He is also, let me tell you that he is also a director of our Deendayal Janaseva Credit Society Trust, and we thank him for providing all necessary support at the government level for completion of the construction of the hospital building. Sir, in the absence of your support, we would not have been able to take up such ambitious project. So thank you for your kind support. And we have now submitted another proposal. Building is ready. We have sanctioned us 10.36 crores, and GSID has taken an MD and the general manager is here. They have taken the project. They have completed the building work. Now after this meeting, we are visiting the site, hospital site. But another proposal is submitted, the proposal of 7.5 crores to IOCL for sanctioning the funds required for medical equipment machinery, and we look forward for the financial support in this regard also. To cut short, Chairman, on behalf of Chairman, once again I request all IOCL dignitaries here to sanction the additional cost for the purchase of the furniture, and you have helped us a lot. So we seek your continuous support. Thank you. Thank you very much. Thank you for warm words of welcome as well as giving a brief information about the project. Now, EDHR and EDMSO IOCL would like to present a bouquet to Honorable Chief Minister. Thank you. Kindly be seated. Let's now watch a short film on the project. Deendayal Multi-Purpose Society is a society of around 40,000 shareholders and around 500 crores turnover.
we decided we have to have a separate charitable trust to cater the needs of people of Bichole. We started doing a lot of charitable work. That time, idea of starting an hospital came up because there was no full-fledged hospital, Ayurveda as well as allopathic hospital, which was catering to the needs of people. So people had to travel to Mapsa, Penjing or other parts of Goa to get the required treatments. And this is how this Deendayal Healthcare Hospital came into existence. Over a period of time, we started looking for help for construction of hospital, and later on IOCL, that is Indian Oil Corporation Limited, sanctioned 10.36 crores under their CSR initiative. It was well supported by our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and Sri Rajendra Arlekarji, who was then part of CSR committee of IOCL, and right now he is Governor of Bihar. When we started this hospital, we had in mind that we will cater the needs of not only Bicholi but other rural parts of Goa as well as adjoining border areas of Maharashtra as well. And that is how we designed a hospital which will have Ayurvedic facilities, allopathic facilities with operation theatres and dialysis unit, etc. I will tell about the various facilities, floor-wise facilities which will be provided in our Deendayal Healthcare Hospital and Research Center. In the basement, we have got our administrative section, superintendent cabin, chairman's cabin, and the conference room, which will be required for our doctors' meetings and to showcase and train other doctors at the time of conducting various surgeries. Along with this, there are various storage, electrical area, electrical panel area, server room, solar battery room, utility area, housekeeping items, stores, medicine stores, stationery store, and various other activities along with changing rooms for our staff. When we come to the ground floor, as we enter, we have our reception area wherein we will have the help desk who will help all the patients and guide them to various departments and sections. After reception, we will have a casualty emergency care service providing area which will be active 24/7. On the ground floor itself, we have X-ray room, ultrasound sonography room, as well as stress test. Along with that, full-fledged pathology lab will be there, which will cater the needs of the testing facilities of the people or the patients coming to our hospital. In-house pharmacy will also be there. When we move to our mezzanine floor, we have Panchakarma section, separate Panchakarma treatment rooms for males as well as females. Along with that, we have got our nurse station, special Ayurvedic therapy called as Shirodhara room, daycare procedures. We have got 5 special rooms. These special rooms will be for those patients who want privacy at the time of their treatment period. As we move ahead to the first floor, this entire 4th floor is dedicated especially for Ayurvedic section. In this, we will have 4 OPDs wherein different doctors, specialty doctors from different parts of Goa as well as India will visit. Along with this, Panchakarma, separate Panchakarma sections for male and female will be there, and most important, we will have separate male and female wards, IPD wards for patients who will get themselves admitted to avail Ayurvedic treatments. Then as we move on the 2nd floor, this is entirely an allopathic ward wherein there will be again 4 OPDs and specialty doctors. We will also have special audiometry room. Along with that, we will have a specialized ophthalmology section wherein all eye-related problems will be diagnosed and treated. Next to it will be a physiotherapy section wherein physiotherapy required for patients will be given there and there itself. Next to it are 2 IPD wards, male and female, and here all patients taking allopathic treatments will be admitted over here, and these are separate wards for male as well as female. As we move to the 3rd floor, this is a special OT block, operation theatre block, wherein there will be an state-of-art modular OT, wherein all the surgeries required
and also covered under Deendayal Janaseva Pratisthan will be carried out. Along with that, there will be a minor OT and high dependency unit, which is recovery room. That will be a dialysis ward wherein there will be 4 dialysis machines which will be catering to needs of dialysis patients who are suffering from chronic kidney diseases, and they need to get dialysis done on regular basis. And then moving on to the top floor, which is a multipurpose hall. This multipurpose hall will not only help the doctors to conduct their CMEs or seminars or training shops, but it will also help the patients as well as public when we'll be carrying yoga workshops, we'll be carrying public health awareness camps, medical camps, as well as health talks. The trustees of Deendayal Janaseva Pratisthan would like to extend our heartfelt gratitude to Indian Oil Corporation Limited helping this noble cause. We would also like to extend our gratitude to Honorable CM of Goa, Dr. Pramod Sawant, for his constant support and guidance during the journey of this Deendayal Healthcare Hospital. Apart from this, we would like to take this opportunity to thank Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Arlikar ji, for his support in the initial phase of this hospital and still continuing his support till date. It's really wonderful to see the project getting completed and in turn, dream coming true. There's a beautiful quote which says, "Successful people have a social responsibility to make the world a better place and not just take from it." Adhering to the same, IOCL has done their best to contribute towards society. Now it's time to hand over the asset transfer report to Deendayal Trust. May I request ED and SH IOCL to hand over the same to the Chairman, Deendayal Trust, Shri Vallabh Sarkar, in presence of Honorable Chief Minister. And I also request all the trustees to come forward for the photo opportunity. Sir. Thank you. I request Mr. M.R. Das, ED HR IOCL, to address the gathering. परम आदरणीय श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, मुख्यमंत्री गोवा, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी MLA, श्री परमेंद्र शेठ, श्री देवीदास संगम पांगल जी निकल गए, वल्लभ सरकार जी चेयरमैन दीनदयाल सेवा ट्रस्ट, दीनदयाल जल सेवा प्रतिष्ठान के डायरेक्टर्स, अधिकारीगण, GSIDC के MP और अधिकारीगण, गोवा प्रशासन के अधिकारीगण, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री गोवा जो दीनदयाल जन सेवा प्रतिष्ठान के ट्रस्टी भी हैं, उनको इंडियन ऑयल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद कि उन्होंने हमें गोवा में हेल्थ फॉर ऑल मिशन, जो गोवा का मिशन है, हमें सहयोग करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कमरे में आने के बाद मैंने देखा कि गोवा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ गोवा के लिए जो टैगलाइन है, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भावे, संस्कृत में मैंने पढ़ा था। इसके पहले और 2 लाइन है, उसको मैं पढ़ रहा था, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब है सब लोग सुख रहे हैं, सब लोग निरोग रहे। और इसी टैगलाइन को लेकर आज जो हम सब लोग बैठे हैं, एक हॉस्पिटल की निर्माण किया गया है और जो इस टैगलाइन को चरितार्थ करता है। और यह हमारे हर्ष का विषय है कि
बिचौली में 50 बेड का जो हॉस्पिटल है, जो GSIDC, दीनदयाल जनसेवा प्रतिष्ठान और इंडियन ऑयल तीनों के संयुक्त प्रयास से बनकर खड़ा हो गया। बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल, बड़ा कलरफुल हॉस्पिटल, जो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह आगे आए हैं। और वो गोवा की जनता, और सिर्फ गोवा की जनता नहीं, यहाँ जो 70 लाख टूरिस्ट आते हैं उनकी सेवा में भी तैयार रहेगा। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी ये ऑपरेशनलाइज हो जाए। और इसमें एलोपैथी और आयुर्वेदिक, पहले होम्योपैथी की भी सोच थी, लेकिन अभी एलोपैथी और आयुर्वेदिक ही हम इसमें कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री सावंत जी, जो खुद भी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, मुझे लगता है इनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस हॉस्पिटल को हमेशा प्राप्त होगा। गोवा राज्य में वेबसाइट देख रहा था, डैशबोर्ड देख रहा था पूरे भारतवर्ष का, पहले से ही स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही सेंसिटिव और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ इंडिकेटर्स हैं। गोवा में इनफैक्ट मॉर्टेलिटी देश में सबसे कम, 5,000 में से 5 है सर। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 70 साल है। और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन सर 90% है। और एक और चीज जो गोवा में जब भी आता हूं तो अपील करती, कंस्ट्रक्शन के टाइम में वल्लभ जी के साथ कई बार हम लोगों ने निरीक्षण रखा था, और ताकि ये प्रोजेक्ट एक्सपेडाइट हो, तो यहाँ के जो जीरो वेस्ट टूरिज्म पॉलिसी है वो बहुत ही कारगर और इफेक्टिव है। और निश्चित तौर पर यह सैलानियों को अट्रैक्ट करता है। और मुझे लगता है कि देश के कई राज्य इससे शिक्षा ले सकते हैं कि जो आपने पंचायत लेवल पर इसकी फाइन ऑपरच्युनिटी स्कीम चालू की है, मैं पूरे गोवा में देखता हूँ बहुत इफेक्टिव है। और हमेशा जब आता हूँ तो इस स्टेट के लिए हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। 70 लाख टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि गोवा की जनता के अलावा उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक अट्रैक्शन होगा और एक सुविधा होगी। इंडियन ऑयल को गर्व महसूस हो रहा है कि इस सुंदर और छोटे राज्य को इस तरह का हम कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। और आगे भी जो वाइस चेयरमैन ने बताया है, इस पर हम अपने बोर्ड के पास जरूर लेके जाएंगे उस प्रस्ताव को। हमें इसके अलावा पूरे देश के लिए करीब हम CSR में 450 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और आपको मालूम होगा कि चीता जो भारतवर्ष से विलुप्त हो गया, हमने इसको साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से लाया है। और मध्य प्रदेश के पूनो फॉरेस्ट में ये इनका प्रजनन भी हो रहा है और नंबर बढ़ रहा है। तो ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चीता का पुनरागमन हुआ है भारतवर्ष में। और हम लोग मुंबई में एक ट्रांसजेंडर अपस्किलिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर जो प्रोस्टिट्यूशन और बेगिंग में लगे हुए हैं, उनको हम 170 लोगों को अपस्किल कर रहे हैं और उनमें 70% को जॉब की गारंटी दे रहे हैं। और पहला बैच अभी खत्म हो रहा है। और मैं बहुत गर्व के साथ बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को ताजमहल पैलेस, जो कोलाबा में ताजमहल पैलेस है, उसमें नौकरी मिली है, अमेजन में नौकरी मिली है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारा रहा है। और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ह्यूमन मिल्क बैंक भी बना रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि कुछ महिलाओं को जो बर्थ के टाइम में, चाइल्ड बर्थ के टाइम में एक्सेस मिल्क होता है, कुछ महिलाओं को मिल्क होता ही नहीं। और ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है रिसर्च के द्वारा कि माता के मिल्क से ज्यादा अच्छा कोई भी जो है इम्यून सिस्टम पैदा नहीं कर पाता है। तो बहुत छोटे कॉस्ट पे हम लोग ह्यूमन मिल्क बना रहे हैं, जो चेन्नई में हॉस्पिटल में तैयार होकर खड़ा है। अगर आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तो हम इसे यहाँ भी रेप्लिकेट करना चाहेंगे। उसमें जो लैक्टेट करती है ज्यादा, जो लैक्टेट माताएं ज्यादा करती है, उनका मिल्क हम ले लेते हैं। और जो नहीं कर पाती उनके बच्चों को देते हैं 3 महीने के अंदर। और उससे जो इम्यून बढ़ता है उसका बराबरी कोई भी दवा नहीं कर सकता है। बहुत लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है सर, इसे हम करना चाहेंगे गोवा में भी। और एक मिशन स्माइल हमने चालू किया है, उसके अंतर्गत जो छोटे बच्चे जिनको क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट लिप मतलब उनका होंठ कटा हुआ पैदा होते हैं क्योंकि माताओं को फोलिक एसिड की जो कमी होती है चाइल्ड बर्थ के टाइम में, तो ऐसे करीब 1,500 बच्चों को हमने ऑपरेशन करवाया है देश के कई राज्यों में। उसमें असम सबसे पहले है, झारखंड है, गुजरात है। और यहाँ भी मौका मिलेगा तो उस प्रोजेक्ट को हम रेप्लिकेट करेंगे अगले वर्ष। उसमें हम छोटे बच्चों का क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन कराते हैं। और इसमें हमने जिस एजेंसी से मदद दिया है वो फॉरेन से भी डॉक्टर्स आते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, और ये सर्जरी करके चले जाते हैं।
तो अगर गोवा में भी इस तरह की जरूरत है तो हम आगे अपना हाथ बढ़ाएंगे। और एक और प्रोजेक्ट जो मैं मेंशन करूंगा, परिवर्तन कर रहे हैं जो गोवा सेंट्रल जेल में हो गया है, मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि हम सिर्फ सिविलियंस नहीं, जेल के अंदर भी गए हैं, ताकि ये जो जेल, मैं शिकागो जेल जो देखने के लिए गया था, वहां पर स्पोर्ट्स इनिशिएटिव से हम माइंडसेट चेंज करने में लगे हुए हैं कि ये जो अपराधी जेल में आते हैं वापस जब समाज में जाएंगे तो अपना सिर ऊंचा करके जाए, वापस क्राइम नहीं करे। एक रेट होता है जिसे बोलते हैं रेडिसिविज्म रेट, मतलब सेम अपराधी वापस में आ जाए, उसकी रेट। तो उसमें शिकागो जेल में अध्ययन हुआ है कि ये रेट अगर आप उसको स्पोर्ट्स की स्किलिंग करते हैं और कुछ उसको पॉजिटिव चीजों में स्किल करते हैं तो वो रेट कम हो जाता है। तो ऐसा हमने इंडिया के 80 जेलों में ऑलरेडी किया हुआ है, गोवा भी है उसमें। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि उनको हमने चेस में ट्रेनिंग दी है। इंडियन ऑयल के पास 9 ग्रैंड मास्टर्स अपने पेरोल में है, मतलब उनके इम्प्लॉई है 9 ग्रैंड मास्टर्स। और इस साल के जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ उसमें यरवड़ा जेल से और भोपाल के जुवेनाइल सेंटर से गोल्ड मेडल लिया, पहली बार। तो हम इस तरह के इनिशिएटिव में लगे हैं और गोवा सरकार और प्रमोद जी सावंत के हम आशीर्वाद लेकर के जो भी प्रोजेक्ट जो मैंने बताया, इसमें अगर हमें आपका मदद मिलेगा तो हम इसे यहाँ भी रेप्लिकेट करेंगे। और फिर से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जीएसआईडीसी का धन्यवाद, और ट्रस्ट तो है ही है। अभी हम ट्रस्ट भी जाएंगे, वहां जाकर देखेंगे कि ये हॉस्पिटल कैसे आगे बढ़ेगा। और जीएसआईडीसी को बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन करने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दास, आपके विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए, और आपका कॉर्पोरेशन जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, उसके बारे में भी आपने हम सबको साझा कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री सौमित्र श्रीवास्तव, ED NSH, to speak a few words. Respected Chief Minister of Goa, Shri Dr. Pramod Sawant ji, respected Dr. Chandrakant Shetty ji, respected Shri Premanand Shetty, Shri Vallabh Sankar from Trust, and other directors and trustees, MD of GSIDC and other officials from there, and other distinguished guests who are gathered here today on this momentous occasion. It is indeed a pleasure to be part of this occasion where Indian Oil is handing over this 4-story building to the trust, which will be working in the offering Ayurvedic as well as allopathic treatments. As Indian Oil, we measure our success not only by the sales what we do, we also want to contribute to the society and enrich the communities which we serve. So guided by our core values, where we added nation first about a year back, beside that we have care, passion, trust, these are the core values. So keeping that in mind, we have been working on various projects where we share our vision of Indian Oil, like in this project where we shared this with Deendayal Janaseva Pratisthan Trust to provide world-class healthcare facility. Like Indian Oil, the trust I found is also deeply committed to serving society with care and passion, as brought out by Shri Patnekar ji in his initial address. The collaboration has been instrumental in bringing to life a one-of-a-kind facility where Ayurveda and allopathy treatments are offered under one roof, a pioneering initiative for the Goa. The state of Goa is renowned for its environmental consciousness, demonstrated through its sustainability practices, biodiversity conservation efforts, and efficient waste management system. Aligning with these values, Indian Oil remains committed to building a cleaner, greener future. In Goa, Indian Oil has a very significant presence with the terminal and extensive network of retail outlets as well as LPG distributors. Indian Oil is also working over in the sustainability sector by providing more greener fuels. Maybe it's like compressed biogas or which is made by municipal waste or press mud, or even with the chicken litter. We have indigenously our R&D has developed this technology where we come out with compressed biogas from these products, and even green hydrogen. We have established one of our first green hydrogen dispensing station in Vadodara outside our refinery. So, and
keeping with the like the culture of as the ministry is also promoting ethanol. So we had Indian Oil was the first one to establish about 400 stations with E100, where 100% ethanol fuel stations. And this has been in many like Pune or Chennai, where there are hubs of new car manufacturers. They are taking this product to test this. In Goa also we have established one outlet where we have E100 product. Though this is more for building the ecosystem, because as people start adopting the greener fuels, the pollution will go down. Another sector where we are more working in Goa, we have almost 17 EV chargers we have installed at our retail outlets, and with help of some agencies we are also going outside the petrol pump to like bus stands and all, where we wish to establish more EV stations. So Indian Oil as such will continue to support Goa's growth objectives while contributing to a sustainable and greener tomorrow. I thank you all for organizing this function, and thank you to the Chief Minister for Thank you very much, Mr. Soumitra Srivastava, for your address. We are pleased to have amongst us Honorable MLA, my constituency, Shri Premendra Sheth, requesting you, sir, to give your best wishes in few words. नमस्कार. दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठान च्या हेल्थकेअर रिलेटेड आज नवीन बिल्डिंग लोकार्पण सोहळा हांगासर जाता आनी तुमचे मदीं उपस्थित आसात त्यांचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे गुंजलचे आमदार श्रीकांत शेट्टी, चेअरमॅन वल्लभ भाऊ, तशेंच बाकी हेर सगळे मानेस्त इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रेस. आयज आमकां गुंजलकारां खातीर एक मोठो एक आनंदाचो क्षण आसा, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाच्या सहकार्यान आमच्या गुजरकारांकूच न्हू समग्र गोंयवासियांक आमच्या आरोग्य क्षेत्रांत एक देणगी दिल्या सारकी आयज तांच्यानी दिल्ली आसा. त्या बद्दल हांव तेंचे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाचे हांव आभार मानतां. तशेंच दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठान सिंबॉलिकली तेंच्यांनी आपली एक युनिटी दाखोवन दिल्ली आसा आनी त्यांच्या ह्या फुडारपणान समग्र गोंयच्या जनतेक ताजो वावर दिसता. तेका लागून तेंचे हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी तेंच्या फुडल्या कामांक सुद्दां हांव शुभेच्छा दिता. Thank you so much, Honorable Shri Premendra Sheth. May I now request Honorable MLA Bichuni, Dr. Chandrakant Shetty, to express your wishes. I would like to congratulate Indian Oil Corporation for giving this opportunity to our Deendayal Janaseva Pratisthan, handing over of Deendayal Healthcare. For this function, we have with our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. I again request IOC officers that they should continue their support for Deendayal for the further allocating funds for the infrastructure which is required to start the hospital. I am really happy that this is happening in my tenure. I am really thankful to IOC and again for Deendayal Janaseva Pratisthan. You are very good. Thank you, sir. We are really honored with the gracious presence of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is also one of the directors of the Deendayal Trust. Being an Ayurveda practitioner himself, he paved the way towards planning, execution, and overall approach towards the hospital. His ever-supporting nature, dedicated and selfless services to the people of Goa makes him worthy of appreciation and respect. May I kindly request Honorable Chief Minister to deliver his address. Namaskar. Handing over ceremony, Deendayal Healthcare Hospital building by Indian Oil Corporation to the Deendayal Janaseva Pratisthan. आजच्या खासा सुवाळ्यात आमच्यामध्ये आसात मिस्टर M.R. दास, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ऑफ द HR IOCL, सौमित्र श्रीवास्तव, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर and head of the IOCL of MSO of IOCL. आमच्यामध्ये आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, प्रेमेंद्र शेठ, दीनदयाळ प्रतिष्ठानचे आमचे अध्यक्ष वल्लभ भाऊ साळकर, व्हाईस प्रेसिडेंट श्री कांता पाटणेकर सर आणि आमचे चेअरपर्सन बिचोली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे आसा, माजी सभापती राजेश पाटणेकर हे आमच्यामध्ये उपस्थित आसात, GSIDC MD हरीश हडकोडकर, संदीप चोडणेकर जनरल मॅनेजर आणि खास करून आमचे डॉक्टर शेखर साळकर
in future is an advisor for this hospital. वैद्य सुविनय दामले आणि डॉक्टर ठाकूर, he is also on the advisory committee, advisory panel, डॉक्टर संदीप सावंत और रेस्ट ऑल डायरेक्टर्स हमारे साथ उपस्थित है सर। मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट this hospital. We are supporting almost 10.5 crores of rupees, 10.50 crores of rupees for this hospital. Then and then only it is possible to build this type of सहकार क्षेत्रात काम करता असताना जर आम्ही विश्वास संपादन केलं जाल्यार सहकार क्षेत्रांतल्यान आरोग्य क्षेत्रात येवपा खातीर चड उशीर लागना। आणि म्हाका दिसता गोंयांतल्यान ही देशांतलें एक नामवंत उदाहरण आसतलें। आमी पूर्वीच म्हणटा सहकार्यातून सहकार हो फुडें वचत आसा आणि त्याच धर्तीचेर दीनदयाळ पतसंस्था 1996 सुरू जाल्ली संस्था ही लोकांनी तिचेर विश्वास दवरलो, तांच्यांनी विश्वासान लोकां बरोबर काम केलें आणि जेन्ना विश्वासात काम करता तेन्नाच एखादी सरकार संस्था फुडें वचपाक शकता। म्हणून आज दीनदयाळ सारकेल्या पतसंस्थेतल्यान म्हणजे सरकारांतल्या आपल्या कामांतल्यान हे आज आरोग्य क्षेत्रांतलें काम करपाक लागलेलो आसा। हांव खरोखरूच मनापासून म्हणजे सगळे दीनदयाळ कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे सगळे डायरेक्टर्स हाचे खूब खूब आनी मनापासून म्हणजे खूब अभिनंदन करता। आज ॲलोपॅथीक अँड आयुर्वेदिक इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल, इंटिग्रेटेड गोंयांतलें पयलें हॉस्पिटल आणि ज्या धर्तीचेर तांच्यांनी विचार केला इन फ्यूचर आयुषियन विल सपोर्ट डेफिनेटली अपने हॉस्पिटल एक बार जाके देखने के बाद आप लोग आगे का सपोर्ट भी देना चाहिए, वो हमेशा के लिए देंगे। ये और मेरी भी रिक्वेस्ट है, being as the Chief Minister of the state also and the Director of the Deendayal Society, I also request that will help not only for the general public but it will in the long run, as you said, for the tourists those who are coming and the neighboring states from the Maharashtra and Karnataka. These patients त्याच्या ह्या इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर मॉडेल हॉस्पिटल्सांत म्हाका दिसता फुडल्या एक 5 ते 6 म्हयन्याच्या भितर हे बेगिनात बेगीन सुरू जावपाक जाय आणि ते सुरू जाल्या उपरांत थंयसर ॲलोपॅथीक आनी आयुर्वेदीक ट्रीटमेंट आतांच डॉक्टर संदीप हांणी एक्सप्लेन केल्या त्या प्रमाणे थंयसलो सिस्टम आनी फॅसिलिटीज कशा पद्दतीन आसतली। पुराय आमच्या भितरल्या तालुक्यात एकमेव म्हणजे हॉस्पिटल्स जे पुराय त्या परिसरांतल्या लोकांक कॅटर करपी हॉस्पिटल्स आसतले। 50 बेडेड हॉस्पिटल्सचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करप आणि लॉंग रन हे चलोवप ही सादी गजाल न्ही, कारण प्रायवेट सेक्टरांतल्यान हॉस्पिटल चलयता आसतना सुद्दां लोकांक जे स्पेशली दोतोरांक खूब कश्ट पडटा। म्हाका खबर आसा हॉस्पिटॅलिटी इज नॉट ए इंडस्ट्री, इट इज अ सर्वीस इंडस्ट्री आफ्टर ऑल। आणि तातूंतल्या तेतून आमी जशें म्हणटा की आमचे ऑलमोस्ट दीनदयाळ ठरयला त्या प्रमाणे 10% ऑफ द हॉस्पिटल सर्विसीस विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट those who are for the economical free of cost, those who are below poverty line, okay, for them it will be free of cost. हे सगळे सर्विसीस दिता आसतना हे सर्विसीस इन द रुरल एरिया जे कॅटर स्पेशली इन द रुरल एरियातले पेशंट सगळे कॅटर करतले। हांगासरल्यो स्पेशलिटी म्हणजे बारीक हॉस्पिटलांत ओटी सुरू करप आणि फिजिओथेरपी आणि बाकीचे सगळे प्रॅक्टिसीस ते दिवप हे तितकेच खूब व्हड काम आसा। पण इन लॉंग रन आमची डॉक्टर्स ॲडवायझरी टीम अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर शेखर सारकर, डॉक्टर ठाकूर, बाकीचे सगळे दे विल हेल्प अस इन लॉंग रन। वेगवेगळे डॉक्टर्स आमच्याकडे अटॅच जाल्या उपरांतूय बी थंयसर हे करपाक सुरवात जातली। म्हाका दिसता आमी सातत्यान हेल्थ फॉर ऑल हो कन्सेप्ट दवरून जे दीनदयाळाच्या प्रेरणेंतल्यान जे दीनदयाळ अंत्योदय तत्वाचेर जे काम करता आमी म्हणटा की समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी सातत्यान पावपाक जाय। हे हॉस्पिटल त्याच धर्तीचेर काम करतले आणि आतांय जे ओपीडी सुरू आसा त्योय त्याच अंत्योदय तत्वाचेर सुरवात आसा। म्हाका दिसता गोंयांत आज पर्यंत आयुर्वेदीक हॉस्पिटल हे फक्त सावथ गोवा म्हणजे शिरोडा हांगासर आशिल्ले। नॉर्थ गोंयांतल्या लोकां खातीर अश्यो आयुर्वेदीक फॅसिलिटीज तितक्या मोठ्या प्रमाणात आतां आयुश्यान सुरवात जाली, पण मीन वायल भितोरे सत्तरी आनी ह्या तालुक्या खातीर नाशिल्ले त्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो आमच्या दीनदयाळ हेल्थ केअर हॉस्पिटल हांच्या मार्फत आता तरी ही अवेलेबल जातली। बिकॉज ऑल ऑफ दे आर फ्रॉम द भितोरेन तालुका, मायसेल्फ इज ऑल्सो फ्रॉम द भितोरेन तालुका। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो इन माय तालुका। खरोखरच मनाक एक खोस भोगता, मनाक एक आनंद जाता हे हॉस्पिटल जाता आसतना आणि बीइंग अ पार्ट ऑफ दॅट ट्रस्ट हे म्हाका खूब आनंद जाता की अशा पद्दतीचें हॉस्पिटल
हामी शुरू करवा सके। आपके आयोजन की तरफ से आप हमेशा के लिए ढेर सारे एक्टिविटीज आप देश भर में करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। अंडर यूर CSR इनिशिएटिव्स यू हैव टेकन सो मेनी, इट इज एप्रिशिएटेड दैट आप लोग जो ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन। जो पूरी नहीं काम कर रहे हैं उनके लिए जो स्किलिंग अपस्किलिंग का काम जो आप कर रहे हैं, दैट इज एन एप्रिशिएबल डेफिनेटली, यानी बहुत ही अच्छा काम है। मिल्क बैंक के बारे में आपने बताया, डेफिनेटली गोवा चाहे दीनदयाल ले लो, अदरवाइज गोवा गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेडी टू सपोर्ट वॉट एवर इन द वे, लेकिन द मिल्क बैंक गोवा में स्टार्ट होनी चाहिए। Definitely in future is also means whatever the additional milk bank we can start in the state of Goa, so that it will help for the future in the future for the patients. आपका जो पहले ग्रीन इनिशिएटिव्स पे जो काम कर रहा है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट इज एन कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्रोजेक्ट, इट इज एन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इथेनॉल प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ऑलरेडी ई सर्विस स्टेशन, ई चार्जिंग स्टेशन और इथेनॉल प्रोजेक्ट गोवा में एक स्टार्ट किया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि टू एज अ ग्रीन सिटी या ग्रीन गोवा क्लीन गोवा इस कंसेप्ट के अंतर्गत हम ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने इस तरह के ई चार्जिंग स्टेशन गोवा में और भी शुरू किए या इथेनॉल प्लांट, तो गोवा सरकार की तरफ से आपको पूरा सहकार्य रहेगा। हम चाहेंगे और भी इस तरह के कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट भी आप गोवा में स्टार्ट करें, और फिर वट एवर द सपोर्ट यू रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गोवा टू स्टार्ट विद द कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट, इसके लिए भी हमारा पूरा सहकार्य आपको रहेगा। आप जिस तरह से हेल्थ सेक्टर और बाकी सेक्टर में भी दीनदयाल और बाकी सबको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे छोटा राज्य है, इसलिए ग्रीन एंड क्लीन गोवा के लिए आपको इन फ्यूचर आपका सपोर्ट रहेगा। यही कह के मैं फिर एक बार दीनदयाल जनसेवा प्रतिष्ठान की तरफ से और गोवा सरकार की तरफ से मैं आप लोगों का IOCL का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। Thank you very much, Honorable Chief Minister, for your strong support, your vision and dream to make Goa self-sustained endeavor. Thank you once again for your valuable guidance.